Welcome to the lecture 14 of Power BI series. I am Hajra Hashmi. आज हम डिस्कस करेंगे filter flow. Filter flow is the most important lecture in the data modeling section. यहाँ पे हमारे पास 3 टेबल नज़र आ रहे हैं. 2 डाटा टेबल हैं, सेल्स डाटा एंड रिटर्न्स डाटा, और एक लुकअप टेबल है, टेरिटरी लुकअप टेबल. इसमें आप ये नोट करें, ये दोनों जो हैं फिल्टर डायरेक्शंस, ये रिलेशनशिप बता रही हैं. बाय डिफ़ॉल्ट दीज विल पॉइंट फ्रॉम द वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप lookups to the many side data. When you filter a table, that filter context is passed along to all related downstream tables following the direction of the arrow. Filters cannot flow upstream against the direction of the arrow. एक प्रो टिप ये है कि अपने जो लुकअप टेबल्स को हमेशा अबव रखें डाटा टेबल्स के, ताकि जो है वो आपको डाउनस्ट्रीम जो फ़्लो है वो डिमॉन्स्ट्रेट हो जाए. अगर हम ऐसा टेबल बनाना चाह रहे हैं जिसमें टेरिटरी की, ऑर्डर क्वांटिटी और रिटर्न क्वांटिटी हो, ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास सेल्स डाटा में है और रिटर्न क्वांटिटी हमारे पास रिटर्न डाटा में है, तो इन दिस केस द ओनली वैलिड वे फिल्टर both sales and returns data by territory is to use the territory key field from the territory lookup table, which is upstream and related to both data tables. हम territory key field sales के टेबल की हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास रिटर्न की जो वैल्यूज़ हैं वो सही नहीं आएंगी, since the filter context cannot flow upstream to either one of the table. Thirdly, अगर रिटर्न्स टेबल की हमने टेरिटरी की को यूज़ किया और हम इसी टेबल में ही अपनी दोनों वैल्यूज़ को भी डालना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू से सही नहीं नज़र आएगी, क्योंकि जो है जो डाटा है वो अपस्ट्रीम फ़्लो नहीं कर सकता. नाउ लेट्स डिस्कस हाउ कैन वी हाइड अ रिपोर्ट और फील्ड और अ मेजर फ्रॉम द रिपोर्ट व्यू. Hiding fields from report view make them inaccessible from the report tab, although they can still be accessed within the data or relationships view. This is commonly used to prevent users from filtering using invalid fields or to hide irrelevant metrics from view. So this is a really common way to prevent users from accidentally filtering using invalid fields, like a foreign key from a data table instead of a primary key from a lookup table. So here is a pro tip that hide the foreign key columns in your data tables to force users to filter using the primary keys in the lookup table. Now let's discuss the best practices for data modeling. Number 1 is focus on building a normalized model from the start. Make sure that each table in your model serves a single distinct purpose. Use relationship versus merge tables. Long and narrow tables are better than short and wide. Second is organize lookup tables above data table in the diagram view. This serves as a visual reminder that filters flow from downstream. Avoid complex cross-filtering unless absolutely necessary. Don't use two-way filters when one-way filter will get the job done. And the fourth one is hide fields from report view to prevent invalid filter context. Recommend hiding foreign keys from data table so that users can only access valid fields.